Now today let's start with chapter number 4, light and shadow. In this chapter we will study about light and the shadow. Let's start with the chapter. When we are in a dark room, we are not able to see things around us. But if we switch on the light, suddenly we are able to see everything. Why this happens? This happens because when you open the light, when you open the word, the light has helped you to see the things around us. कि वो आपको चीजों को दिखाने में help करती है. That is your light. Now, an object that gives light, वो भी object आपको light दे रहा है, that is the source of light. Object that gives light are called source of light. Light, it is a form of energy and very important in all aspects of our life. The sun, which is the biggest source of light, in the absence of sunlight, देखो जब sunlight का absence होता है, तो जो plants होते हैं, they will not be able to grow. Why? Because they require sunlight to prepare their food. Why they will not grow? If there will be absence of sunlight, why plants will not grow? Because they require sunlight to prepare food. Now, sources of light. देखो light जो है वो travel करते light source है. तो first is natural light, sun. Sun क्या है आपका main natural light है या main source of natural light. Sun, it is the main source of natural light. It shines brightly during the day and helps us to see things. ये क्या करता है? ये shine करता है brightly during the day और हमें help करता है चीजों को देख. Light of sun is very essential for us. जो light है sun की वो बहुत ज़्यादा क्या है? Essential है. Now artificial light. देखो sources of artificial light क्या क्या है आपके? Burning wood, candles, earthen lamps. Candles are made of wax, oil and brick and they are used in lamp to burn. Nowadays we use electric bulb, ट्यूब लाइट, लैम्प एज अ सोर्स. देखो पहले हम क्या करते थे, हम कैंडल्स का यूज करते थे घर को लिट करने के लिए या फिर वो लैम्प्स होते थे. बट नाउ वी यूज ट्यूब लाइट्स, बल्ब एंड डिफरेंट सोर्सेज टू लिट आवर हाउस विद लाइट. नाउ नेक्स्ट इज शेडो. व्हाट इज शेडो? इट इज द डार्क शेप दैट फॉर्म सरफेस व्हेन द लाइट फेलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो. जब लाइट फॉल करती है ऑब्जेक्ट पे और वो एक क्या बनाता है? शेप बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? शेडो. ओनली दोज ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो थ्रू विच लाइट कर. खाली वो ही ऑब्जेक्ट शेडो फॉर्म करता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती. ठीक है. शेडोज आर ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. लाइट फेलिंग फ्रॉम द राइट, द शेडो विल बी फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट. अगर राइट शेडो आपकी राइट से गिर रही है तो शेडो कहाँ फॉल करेगी? लेफ्ट. Now, if the light is above the object, the shadow will be formed under the object. अगर light जो है वो above the object है, shadow form कहाँ होगी? Under the object. Next is length of shadow in the sun. देखो अगर हम बात करें डे में तो there is different shade. पूरे दिन में आपको अलग अलग शेड दिखाई देगी, कभी लॉन्ग दिखाई देगी, कभी शॉर्ट दिखाई देगी. If we say shadows are long in morning and evening. देखो जब सन रेज फॉल करती है स्लैंटिंगली तो शेडो कैसी होती है? लॉन्ग. व्हेन दे आर शॉर्ट इन द आफ्टरनून व्हेन द सन शाइन ओवर. जब सन क्या होता है? ओवरहेड होता है, तो जो हमारी शेडो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वो शॉर्ट. एंड द शेडोज आर ऑलवेज डार्क एंड ब्लैक इन कलर. द कलर ऑफ द शेडो डज नॉट डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो तो शेडो का कलर है वो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड नहीं होता. कलर कोई भी हो, शेडो कैसी होगी? या तो डार्क होगी या फिर ब्लैक. नाउ अ शेडो गिव्स अस द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. अ शेडो इज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ. हमेशा आप देखोगे जो शेडो फॉर्म होगी वो अपोजिट साइड पर होगी. लाइक शेडो इन द मॉर्निंग बहुत लॉन्ग होती है, नून में बहुत छोटी होती है और इवनिंग में क्या होती है? बहुत लॉन्ग. Now, let's recall in this chapter I have told you about what is light. Sources of light I have told you. We have natural and artificial sources. In natural sources, we have sun. In artificial sources, we have bulb, lamp, candle, different sources. Then I have told you about shadow. We have studied that shadow is formed in different day, in different times. Shadow are formed according to our day. If we see in the morning and evening, the shadow is long. And in the afternoon, it is short. Why it is short in afternoon? Because
सन क्या होता है, ओवरहेड होता है, और मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा होता है, स्लाइटिंग होती है. नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. इट गिव्स हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. कौन देता है, सन. शेडो आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. It is the artificial source of light. Star, sun या torch. It is necessary for the formation of shadow. Light, darkness is sky. Darkness. Dash travel from the light source. Your light, sun या moon, light. Next is fill in the blanks. Let's start with the fill in the blanks. Dash helps us to say things. किसकी help से आप चीजें देखते हो, light की. Object that gives light are source of light. Object that gives light are, they are the sources of light. The dark shape forms on the surfaces. डार्क शेप बनती है आपकी सरफेस पे, उसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज शेडो. The dash of shadow is different size. Now look at the picture. It tells us the information about shadow. Observe the picture and fill in the blanks. Shadow is formed when the path of light is blocked. The dash does not allow light to pass through it. The object. Shadows are formed on the dash side of the surface, opposite. Shadows are dash in color. Dark black in color. Next is name of the following. It gives us heat and light. What gives us heat and light? Sun. It helps us to say things around us. किसकी help से हम चीजों को देखते हैं आसपास? It gives the idea of the shape of object. Shadow. Days are shortest in the afternoon. Main source of light, sun. Now light helps. किसमें help करती है? To see. Shadow, opposite side. Length of shadow is different. Natural source क्या है आपका? sun. ठीक है? Let's start with the answer the following question. What is the source of light? Sun is the main source of natural light. Natural source of light sun है. And there are different sources like torch, आपकी candle, bulb, tube light. Name 5 sources of light other than sun. Tube light, bulb, candle, lamp, ठीक है, और आपका LED. What is shadow? Shadow is formed on the opposite side and it is opposite side and shadow is formed when the object क्या करता है, light को रोक देता है. Shadows are shortest in the afternoon. Why? Because जो sun होता है वो आपके overhead होता है. Name any 5 sources of artificial light. What are the 5 sources of artificial light? Your torch, bulb, ठीक है, lamp, candle, ठीक है, and tube light. Now time to fun you have to do yourself. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.